In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum students. I am Nosheen, your English teacher. Today I am going to deliver lecture based on the topic Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. Dear student, in our previous lecture we have read the same chapter. We have done the video of the chapter. Before going to start stanza number 3, we revise stanza number 1 and 2. The poet says that I think I know the owner of the woods that I am passing through. He will not come to know about my presence here, as he lives in a house in the village. So he will not get into trouble for trespassing on his land. At the same time, he does not know that his woods are getting covered with snow, so I stopped there. Let's discuss stanza number 2. The poet says that I find my little horse confused at this unusual stopping in the middle of the woods with no one in sight, with not even a farmhouse nearby between the woods and a frozen lake. It happens to be the darkest evening of the winter. Okay students, let's know the meaning of the underlined words of stanza number 3. Harness. Harness means bridle, control, घोड़े की जीन. Shake, हिलाना, jerk, jolt. Mistake, fault, misunderstanding, गलती. Sweep, movement. साए साए की आवाज. Downy, soft, नर्म. बर्फ के फ्लेक, बर्फ के गाले. Very small loose mass of snow. Piece, scrap. Now I am going to explain stanza number 3. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. He gives his harness bells a shake. घोड़ा अपने साज मतलब जीन, लगाम वगैरह की घंटियों को झटकता है. टू आस्क, पूछने के लिए. आस्क मीन्स इंटेरोगेट. इफ देयर इज सम मिस्टेक, मुझसे ये पूछने के लिए कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा. The only other sounds the sweep. The only other sound sweep. दूसरी आवाज़ें बस सरसराहट की. Of easy wind and downy flake. हल्की हल्की हवा के चलने की और नर बर्फ के गालों के गिरने की. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The poet has stopped in the woods where there is no farmhouse nearby. His horse shakes the bell in order to make it sure that his owner has not made a mistake in stopping there. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. There is nothing in the woods except the hiss of the winds
and the hum of falling flakes of snow. Let's translate this paraphrasing into Urdu so you can understand it easily. The horse gives a jerk. Jerk means jolt, shake. घोड़ा हिलाता है टू हार्नेस बेल, यानी अपने गले में पड़ी बेल को, घंटी को, टू आस्क पूछने के लिए, द रीज़न वजह को, यानी घोड़ा अपने गले में पड़ी घंटी को हिलाता है पूछने के लिए, द रीज़न वजह पूछने के लिए, कॉज ऑफ स्टॉपिंग रुकने के लिए, देयर वहाँ मतलब एट दैट प्लेस, वाई ही हैज स्टॉप्ड देयर. ही वॉन्ट्स टू आस्क वो पूछना चाहता है. What does he want to ask? वो क्या पूछना चाहता है? He want to ask if there is any mistake. क्या कोई गलती है कि क्या उसका मालिक कोई गलती तो नहीं कर रहा. Other than the sound, अगर कोई आवाज़ है produced जो पैदा हुई by the bell, सिर्फ घंटी की आवाज़ थी, यानी एक घंटी की आवाज़ ही सुनी जा सकती थी. The only sound और सिर्फ आवाज़ that could be heard और दूसरी आवाज़ जो सुनी जा सकती थी is the sound of wind, हवा की आवाज़, and soft flakes of snow और बर्फ़ के नर्म नर्म गालों की और हवा के चलने की आवाज़ ही सुनी जा सकती थी. Why does the horse give a shake to his harness bell? घोड़ा क्यों झटका देता है अपने गले में पड़ी घंटी को, मतलब क्यों झटका देता है, क्यों हिलाता है. The horse shakes his harness bell. घोड़ा अपने गले में पड़ी घंटी को हिलाता है to ask पूछने के लिए, the reason वजह को, और stopping there वहाँ रुकने के लिए. What is the other sound that could be heard? और दूसरी कौन सी आवाज़ थी जो सुनी जा सकती थी. The only other sound that could be heard is the sound of wind, यानी सिर्फ एक हवा की आवाज़, and soft flakes of snow और बर्फ़ के नर्म गालों की आवाज़ ही सुनी जा सकती थी. Why does the horse want to move on? घोड़ा हरकत क्यों करना चाहता है. The horse wants to move on. घोड़ा हरकत करना चाहता है because क्योंकि he could not stay, क्योंकि वो नहीं ठहर सकता था. क्यों नहीं ठहर सकता था. In the cold wind, क्योंकि ठंड बहुत थी, यानी ठंडी हवा में, सर्द हवा में वो ठहरना नहीं चाहता था, वो रुक नहीं सकता था anymore मज़ीद.